and for anyone who may want to answer, how has the travel bans from certain countries affected fans maybe coming in for the games, or is that not a consideration? Johnny, go ahead. Yeah, no, it's not a concern for us. For the games now in the Club World Cup, everything has been done in a very smooth way. We have an excellent collaboration, of course, with the president, but with the task force in particular. For next year, the World Cup, we have one more year to work, and the learnings that we have this year with the Club World Cup, which is historic, I say this to all the Americans, because it's the first ever Club World Cup, and it's played in the United States of America. So the learnings we'll have for this will apply them next year. And they're largely sold out, so but I don't know. I don't think he's too worried about the travel ban. He doesn't know what the travel ban is, I don't think. Johnny, tell me what the travel ban is. Right? He doesn't know what it is. He's largely sold out. Like tonight is totally. I've had friends, they heard about this meeting. They said, can you give me tickets? I don't know if I can get tickets. He won't give them to me. We can speak. Maybe John will give them to me. Yeah, please. Mr. President, two questions, if I could. One about Iran and then one domestically. With Iran, what's your message to Americans, both here and abroad, who are not only concerned about the U.S. potentially getting involved in another conflict in the Middle East, but worry about the potential for retaliation here at home? Yeah, well, I don't want to get involved either, but I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. And I think they were a few weeks away from having one. And they had to sign a document. I think they wish they signed it now. It was a fair deal. And now it's a harder thing to sign, you know. It's a lot of water over the dam. But, you know, it's very, I say it very simply, Iran can't have a nuclear weapon. Too much devastation. And they'd use it, you know, I believe they'd use it. Others won't use it, but I believe they'd use it. So that's it. It's very simple as far as I'm concerned. They can't have a nuclear weapon. And then domestically, Missouri Senator Josh Hawley came out this week as the lead sponsor of a bill to raise the federal minimum wage to $15 an hour. It stands out because he's a Republican. There's still 20 states that have it at $7.25. Do you support the legislation or the idea? Well, I haven't seen it. I'd have to speak to Josh. He's a very good friend of mine. That's interesting that Josh did that. I'm going to have to think about that one. Some people agree with it, some people don't. You know, some people say it really turns away business. Restaurants close, and a lot of things happen. Other people agree. I'd have to speak to Josh. He's a good guy. Did you see that For the Iran, the possibility of an Iran deal, is the destruction or the dismantling of the Fordow nuclear enrichment center, is that a prerequisite for a deal? Is that a red line for you? No, it's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, you know, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You know, you can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world. By far, nobody close, and I mean, certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry, so we'll see what happens. I've been asked about it by everybody, but I haven't made a decision. Mr. President, you talked earlier today about having daily conversations with Prime Minister Netanyahu. Yeah. How have those conversations weighed on you in terms of getting more involved? He's been lobbying for the U.S. to get more involved. Has that had an impact in kind of your evolution, sir? Look, we talk, and I'd like to see everything done. I would have preferred having just an agreement, a strong agreement, you know, verifiable agreement. But it was such a shame. They were so close. You know, Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them. And maybe that could still happen, I guess. You know, they do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement, but it's very late. Is it enough of a statement to hold off getting? We're going to see what happens. Look, we're going to see what happens. It as soon as you can would be good. Have you closed the door on meeting with them? No. Okay, so it's still open to them coming here in your Yeah, I mean, they asked if they could come. We'll see if that happens. It's not that easy for them to come. They can't get out. You know, they're in Iran, and in one case, the guy wanted to come so badly, but he can't get out because his bombs dropping all over the place. Have you seen
to the Tucker Carlson and Senator Ted Cruz interview, it seems like this issue on whether or not the United States should strike is kind of dividing a lot of your supporters. No, my supporters are for me. My supporters are America first. They make America great again. My supporters don't want to see Iran have a nuclear weapon. Tucker's a nice guy. He called and apologized the other day because he thought he said things that were a little bit too strong, and I appreciated that. And Ted Cruz is a nice guy. I mean, he's been with me for a long time. I'd say once the race was over, he's been with me ever since, right? But very simple. If they think that it's okay for Iran to have a nuclear weapon, then they should oppose me. But nobody thinks it's okay. People that don't want, I don't want to fight either. I'm not looking to fight. But if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon, you have to do what you have to do. Maybe we won't have to fight. Don't forget, we haven't been fighting. We add a certain amount of genius to everything, but we haven't been fighting at all. Israel's done a very good job of that, but we'll see what happens. The bottom line is they can't have nuclear, and if I can't imagine that Ted Cruz said it's okay for Iran to have nuclear, including Tucker. I don't think Tucker says it's okay. The problem is then they get themselves into a thing. They don't want them to have nuclear, but then they say, well, we don't want to fight. Well, you're going to have to make a choice because it's possible that you're going to have to fight for them not to have nuclear. And it's interesting because I did ask Tucker, I said, well, are you okay with nuclear weapons being in the hands of Iran? And he sort of didn't like that. He didn't want to really, but he sort of didn't like that. And I said, well, if it's okay with you, then you and I do have a difference. But it's really not okay with him. Therefore, you may have to fight. And maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. I'm not going to let that happen. Mr. President, you had a bit of a row with President Emmanuel Macron of France the other day, the G7 No, it sounded like. he's a nice guy. Look, he said I was going back home to make a ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. And I said, why do you say that? Why would you say ceasefire? It's a bad term to use. Because a ceasefire means like everything's going swimmingly, we'll take a little time off. It's not. We're not looking for a ceasefire. We're looking for a total, complete victory. Again, you know what the victory is. No nuclear weapon. Mr. President, So I thought it was a very badly worded statement by him, and obviously I let him know that. on the southern border, you've had record low numbers for the month of May, 95 apprehensions, 0 releases, compared to that of the previous administration exactly a year ago, more than 60,000 releases. What do you attribute that success to? I like you. Who are you with? Turning Point USA, sir. Well, they're very good. Turning Point. Charlie, very good. That's what I call a good question, fellas. 1 out of 10, John. 1 out of 10, but that's a really good question. No, we had record good numbers on the border. And people are coming in, but they have to come in legally. Like some of these guys behind me, they have to come in legally. And if they come in legally, we want them. They have to say they love America, they love our country. And if they can't say that, we don't want them. Thank you very much. Very nice. Thank you very much, everybody. Thank you, President. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you. आपको बताएं, सदर ट्रम्प बातचीत कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। ट्रम्प की जानिब से ऐसा कहा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू थी। सदर ट्रम्प ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बात हो रही है। पहली बार किसी अमरीकी सदर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सदर ट्रम्प की ये मुलाकात, तहम मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई अहम तारीखी मोड़ है। सदर ट्रम्प की जानिब से कहा गया कि पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। ईरान से बातचीत का मामला अब बहुत ताखीर का शिकार हो चुका। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ। हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। तो आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद उनकी जानब से ये गुफ्तगू की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, ताज़ा गुफ्तगू। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। सदर ट्रंप ने बताया, पहली बार
किसी अमरीकी सदर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ये मुलाकात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सदर ट्रंप की अहम तरीन मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात में ये इंतहाई अहम और तारीखी मोड़ माना जा रहा है। पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की। सदर ट्रंप ने कहा ईरान से बातचीत का मामला बहुत ताखीर का शिकार हो चुका। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। सदर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ के साथ उन्होंने ये जुमला भी अदा किया कि उनके नजदीक जो जीत है वो उसको नो न्यूक्लियर वेपन से ताबीर करते हैं। ये भी एक अहम स्टेटमेंट है, अहम जुमला है। बिल्कुल, सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा कि हम नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ है। सदर ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया ईरान से बातचीत का मामला अब बहुत ताखीर का शिकार हो चुका है। पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाक अमरीका ताल्लुकात में ये इंतहाई अहम तारीखी मोड़ है, ये अहम मुलाकात। और इस अहम मुलाकात के बाद हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ फतह उसके एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। तो हमें इसी सिलसिले में मजीद बात भी करना होगी। तज्जियाकार फैज रहमान साहब हमारे साथ हैं। फैज रहमान साहब, अब से पहले भी हम पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के ऊपर बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ता हुआ जो एक रसूख है, जो उसका असर है, उसके बारे में भी बात कीजिए। खास तौर पर ये जो अब ताज़ा गुफ्तगू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आई उसके बाद ये मैं इस वक्त स्क्रीन नहीं देख रहा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी डिस्टिंक्ट आवाज़ किरण, आप किरण है, राइट? जी, मैं किरण आफ्ताब हूँ। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी फैज साहब, आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो देखिए, बात बहुत अहम बात है, यानी जितनी भी इसकी अहमियत का जिक्र किया जाए, अनबिलीवेबल कहना ये चाहिए कि नाकाबिल यकीन इस वक्त सूरत हाल इस तरह से है कि एक अमरीकी सदर जो कि इस वक्त वाक़तन एक दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, वो एक मुल्क के आर्मी चीफ से बैठने के बाद ये कह रहा है कि मुझे एजाज़ हासिल हुआ और हमने इनसे ट्रेड और मुख्तलिफ मामलात पर बात की। और इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ जगह पर ये कह चुका हूँ कि ज़ाहिर है इसके कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी अहम है और वो ज़रूर हिस्सा होगा। और ये ख़ुद उन्होंने अभी मंडे को जो कम्युनिटी के साथ जो बातचीत की, जहाँ मैं मौजूद था, वहाँ पर उन्होंने ये इंडिया दे दिया था कि वो सदर ट्रंप से मिलेंगे और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से तकरीबन $1 ट्रिलियन की का जो मिनरल्स, रेयर अर्थ की जो वो माइनिंग है, उसका प्रपोज़ल पेश करेंगे। वो भी आया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारी पोजीशन ईरान पर यह है कि हम मुकम्मल तौर पर ईरान के साथ खड़े हैं और इन हमलों की मजम्मत करते हैं। और फिर ये ऐड किया कि सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इस क़ज़िये का, इस कॉन्फ्लिक्ट का जल्द से जल्द ख़ात्मा हो। बहरहाल वो उनके अल्फाज हैं। अब ट्रंप ने आपने को सुन लिया कि वो चाहते हैं कि जब तक कि टोटली ईरान का मामला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल ना हो, मुकम्मल तौर पर रुक ना जाए, उस वक्त तक ये जंग नहीं रुकेगी। अच्छा देखिए, इसमें जो एक एलिफेंट इन द रूम है वो है पाकिस्तान के सियासी हालात। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि इस मीटिंग का जो बैक होम जो असर होगा वो बड़ा मॉन्यूमेंटल होगा। आज जो बातें ट्रंप से कही गई हैं और ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई और एक गैर मुतवक्का अंदाज से ये मुलाकात मटेरियलाइज हुई है, इसके बाद मुझे लगता है कि वहाँ पर सियासी तब्दीलियों पर जो बातचीत हो रही है, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, उस पर भी इसका बहुत बड़ा असर होगा। और पाकिस्तान और भारत के हवाले से मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने भारत को जंगी तौर पर एक शिकस्त दी, अस्करी एक बरतरी हासिल की खित्ते में, बल्कि आज जो है सिफारती तौर पर जो पहले ही से एक अच्छा खासा इनका एक इन्फ्लुएंस पैदा हो गया था वाशिंगटन में, आज उस पर एक मोहर सख्त हो गई है इस मीटिंग के बाद। और जिस अंदाज से और जिस तरह से, ये बहुत कम होता है कि एक मिलिट्री चीफ से बात करने के बाद फिर सदर अमरीका बाहर आकर बाकायदा उस मुलाकात के हवाले से बात भी करें। मेरा ख़ुद ये ख्याल था इससे पहले, इस मीटिंग से पहले, कि शायद कोई बाकायदा बातचीत का
ذکر نہیں کیا جائے گا، اور جو چیزیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کو اندرون خانہ ہی رکھا جائے گا، لیکن انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا اور یہ بتایا کہ کن کن موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ ان گفتگو پر کیا نتائج نکلیں گے۔ دیکھیے پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اس میٹنگ کے نتائج بہت اہم ہے، اور سب سے زیادہ جو اہم ہے پاکستان کے عوام کے لیے وہ ٹریڈ ڈیلز ہیں جو امریکہ پاکستان کو آفر کرنا چاہتا ہے۔ یہاں سفیر جو امریکہ میں ہے پاکستان کے اور جنرل فیلڈ مارشل صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بنیان المرصوص اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پاکستان میں مکمل معاشی استحکام نہیں آتا۔ تو یہ سب چیزیں آپ اسی طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے صحیح اس وقت اپنے صحیح ٹیلنٹس کا، اپنے صحیح ایک مہارت کا مظاہرہ کیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے سوائے اچھی خبروں کے اور کچھ